need to learn Companies Act 2013? What are the main parameters for defining a company? What are the characteristics of a company? So ye sab we had covered in the last class. So in today's class, our focus will be on how a company is formed and incorporated, and what is memorandum of association basically. In the last class, I had told you that MOA is like a constitution of the company. But to understand the role of MOA, that is Memorandum of Association, in detail, first we need to know the process of the formation of company. So we'll start a chapter with learning the how a company is incorporated. What are the major process? What are the major important details that are need to be taken into consideration while forming a company? And after that, we'll focus on what is Memorandum of Association, what are the objects of the Memorandum of Association, and how we can use this MOA to further our business matters. So now we are starting with formation and incorporation of company. Now, as you can see in the screen, there are several stages in the process of formation of a company. There are 4 major stages. Number 1, promotion. Number 2, incorporation. Number 3, capital subscription. And 4, commencement of business. Now, only the first 2 stages are necessary for a private company. मतलब private और public companies दो होती हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. Private companies के अंदर सिर्फ 2 ही members चाहिए होता है minimum, और public companies के अंदर 7 and more. तो यहाँ पे जो requirements है private company की, वो हमेशा थोड़ी compliance कम होती है as compared to a public company. तो ये क्या बोल रहा है? The first 2 stages are necessary for a private company without share capital, whereas for a public company, all the 4 stages are relevant. Now, the first step is promotion. Now, how do we do this promotion wala part? Now, promotion refers to basically a whole gamut of activities, matlab different types of activities which are necessary for launching an enterprise. It refers to getting an idea that you have to form the company, then taking the necessary steps like what is to be required, where would we get the funds, where is the property, right? How are we going to, what is our objective, what kind of profits we want to make. So the idea से लेके क्या क्या लगेगा कंपनी को शुरू करने के लिए, ये हम प्रमोशन स्टेज पे ही डिफाइन कर देते हैं, that what is our goal and what is required to achieve that goal. So the persons who assume the task of the promotion of launching the enterprise as a going concern is known as a promoter. अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 जो है कंपनीज एक्ट का, वो डिफाइन करता है प्रमोटर कौन है. प्रमोटर कौन है? जिसका नेम प्रोस्पेक्टस में डालते हैं हम. व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन कार्ड होता है जो बताता है that these are the that we are launching our business into public, और हमारे बारे में जानने का एक पैम्फलेट काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस. तो ये क्या हो गया? सो प्रमोटर इज समवन जिसका नेम प्रोस्पेक्टस में डाला हुआ है, उसे आइडेंटिफाई करते हैं हम एनुअल रिटर्न्स में. Second, this promoter has a control over the affairs of the company, directly or indirectly. Either he is a shareholder, either he is a board of directors wala member. So he has control over the affairs of the company. Third, in accordance with whose advice, directions or instructions the board of the directors is accustomed to act. So कहने का मतलब क्या है? The main boss, we can say the main face of the company is the promoter. So according to Palmer, what does Palmer say? A person who originates a scheme for the formation of the company has the memorandum and articles prepared, executed, and registered, finds the first directors, settles the terms of preliminary contracts and prospectus, and makes arrangement for advertising and circulating the prospectus. यानी कि जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि जो मेन हेड है, जो पूरा आइडिया निकालता है कंपनी की फॉर्मेशन का और नेसेसरी स्टेप्स लेता है ताकि कंपनी का फॉर्मेशन हो सके, वो प्रमोटर होता है. तो पाल्मर भी यही बोलता है कि जो आइडिया लॉन्च करता है, जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स प्रिपेयर करता है उस कंपनी को एग्जीक्यूट करने के लिए, रजिस्टर करवाता है कंपनी को, फर्स्ट डायरेक्टर्स के सिग्नेचर लेता है, सेटल करता है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनी के बनने से पहले हुए हैं, और प्रोस्पेक्टस इशू करता है, अगर प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी है, टू द पब्लिक, एडवर्टाइजमेंट्स करता है, उन सबको हम प्रमोटर बोलते हैं. A
promoter can be an individual, syndicate, association, partnership, or even a company. So that is the point. Okay. Apart from this, what is the legal position of a promoter? अब भाई promoter is neither an agent nor a trustee. इसीलिए उसकी पोजीशन बहुत पेक्यूलियर होती है. हम उसे बोलते हैं फिड्यूशरी पोजीशन है इसकी. फिड्यूशरी पोजीशन क्यों है? Because he is the main person who put forth a lot of effort in forming the company. He directly or indirectly takes care of the affairs of the company. So his position is known as quasi trustee or a fiduciary position towards the company and the original allottee of shares. The duties of a promoter, जो पाल्मर की डेफिनेशन में एक एक पॉइंट था वही उसकी ड्यूटीज है. नंबर 1, promoter must not make any secret profits at the company's expense. कंपनी के बेनिफिट के बारे में सोचो, कुछ भी उससे छुपाना नहीं है. सो देयर शुड बी नो सीक्रेट प्रॉफिट्स. दैट प्रॉफिट शुड बी फॉर द कंपनी एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट, इसी से निकल के आता है द प्रमोटर शुड फुल्ली डिस्क्लोज ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स. कुछ भी छुपाना नहीं है, ना सीक्रेट प्रॉफिट्स कमाना है ना रेलेवेंट फैक्ट्स को छुपाना है. यू नीड टू बी ओपन. सो इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रमोटर इज नॉट अलाउड टू डिराइव प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी टू द कंपनी unless those facts affect the willingness of the company to purchase the property. तो इसमें ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोलते हैं, पेक्यूलियर पॉइंट. ये कहते हैं कि अगर प्रमोटर अपना प्रॉपर्टी कंपनी को नहीं बेच सकता जस्ट टू गेन अ प्रॉफिट. हाँ, अगर कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनुअल जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि हाँ हमें ये प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए जिससे हमारे बिजनेस को फायदा होगा, तब अलाउड है. सो इसके लिए काफी सारे केसेस भी पड़े हैं. अगर जैसे इसके अंदर काफी सारे केसेस भी निकले कि अगर फुल डिस्क्लोजर नहीं गया है तो उस केस में नहीं माना जाएगा. तो इसके लिए काफी सारे केसेस हैं, जैसे ये है इरलैंगर वर्सेस न्यू सॉम्ब्रियो फॉस्फेट कंपनी 1878. सो डिसऑनेस्ट प्रमोटर्स नहीं चलेंगे. यू हैव टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स. यू कैनॉट अर्न सीक्रेट प्रॉफिट्स. Third, it is the duty of the promoters not to make any unfair use of their position and disclose their free position to the company. So everything is all about disclosures and openness. अब क्वेश्चन आता है ये इतनी डिटेल में क्यों दिया है? तो ये लास्ट पैराग्राफ बहुत क्लियरली बताता है. Companies Act is not against the profits made by the promoter, but it is about the non-disclosure. If you are making profits, make profits, but disclose it in your balance sheet. Disclose it to the shareholders. Thus, the promoters will be compelled to hand over any secret profit that he has made to the company. The company can also sue for the rescission of the contracts, मतलब खत्म करने का of the contracts of sale by the promoter, where the promoter has not disclosed his interest in the contracts. ठीक है, तो प्रमोटर की लाइबिलिटी यही है कि उसे सब कुछ डिस्क्लोज करना है, वो फ्रॉड नहीं कर सकता, उसे क्या बोलते हैं सारे कंपनीज एक्ट 2013 के पैरामीटर्स को मानना है. Does the promoter get any remuneration? The question is this. Now he is taking a big part in the formation of a company. So yes, he should get something. So इसके अंदर बड़ी clearly ये दे रखा है. A promoter must be remunerated for the initiative and effort. ये Companies Act 2013 ही चल रहा है. Because he puts a lot of effort into launching an enterprise. However, a promoter has no right to get compensated from the company for his services in promoting the company unless there is a contract to that effect. मतलब वैसे अगर हम देखा जाए तो अच्छी बात है, उसे अपने इनिशिएटिव और एफर्ट के लिए रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो कंपनी बाइंडिंग नहीं है कुछ पे करने के लिए. सो इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकल सेंस, प्रमोटर अपना रेम्यूनरेशन ले ही लेता है, लेकिन किस तरीकों से? नंबर 1, प्रमोटर सेल्स ओन प्रॉपर्टी फॉर कैश और फुली पेड अप शेयर्स एट अ प्रॉफिट, लेकिन फुल डिस्क्लोजर दे रहा है. सेकंड, he has the option to buy a number of shares in the company. मतलब वो certain number of shares खरीद सकता है कंपनी के at par, कोई प्रीमियम नहीं देना उसे. Third, he may be given commission on the shares sold. And fourth, the promoter is paid a lump sum money by the company as remuneration. So any remuneration paid to the promoter must be disclosed in the prospectus. Preliminary और pre-incorporation contract. ये question बड़ा अच्छा है for the exam point of view also, कि अगर कंपनी की फॉर्मेशन से पहले वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में साइन करा है तो
वो कंपनी तो उस टाइम तक इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई थी, इट वाज नॉट इनटू एग्जिस्टेंस। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग होंगे? और अगर नहीं भी बाइंडिंग होंगे तो किस केसेस में वो बाद में भी बाइंडिंग हो सकता है? सो ये सब चीजें समझने के लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना है। सो द फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो पहली लाइन क्लियरली बोलती है दैट नो कॉन्ट्रैक्ट कैन बाइंड अ कंपनी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन। जो हम स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पढ़ रहे हैं, जब तक वो पूरा स्टेज इनकॉर्पोरेट, जब तक कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से नहीं मिल जाता कि वो इनकॉर्पोरेट हो गई है, तब तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होगा। टू कंसेंटिंग पार्टीज आर नेसेसरी फॉर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अभी बता रहे क्यों नहीं होगा। Whereas a company before its incorporation is non-existent. तो जब कंपनी बनी ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट की दो पार्टीज है ही नहीं, तो बाइंडिंग कैसे होगी? Thus, we see that the promoters usually enter into contracts to acquire some property or the right of the company which is yet to be incorporated. Such contracts are known as preliminary or pre-incorporation contract. जो कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले हुए हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, अब a pre-incorporation contract purported to be made by a company which does not exist is a nullity. बस वही बात बोल रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि कंपनी उस टाइम तक बनी ही नहीं है, तो हम उसे void मानेंगे, null मानेंगे। इसका इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, why this is important? Because when the company comes into existence, it can neither sue nor be sued on that contract. तो इसमें बड़ा अच्छा केस हुआ है। A solicitor prepared the memorandum and articles of association of the company and paid the registration fees and other expenses to obtain the registration of the company. अब एक solicitor ने इतना सारा services provide करी ताकि registration हो जाए company की। He did this on the instructions of certain persons who later become the company's directors. Of course, solicitor की services हायर करी थी कुछ लोगों ने जिन्होंने मिलकर अब कंपनी बनाई और वो कंपनी के डायरेक्टर्स बन गए। He claimed his fees and expenses on the liquidation of the company. जब बाद में क्या हुआ कि कंपनी हो सकता है लिक्विडेट हो गई, खत्म हो गई, तो उसने बोला भाई मेरी फीस और एक्सपेंसेस जो मैंने पे करे हैं वो तो पे करो। Hell, in case of this law, it was found that the company was not liable to pay the solicitor's expenses as the company was not in existence at the time when expenses were made. So because of certain these cases, हमें कंपनीज एक्ट 2013 का इंटरप्रिटेशन पता चलता है कि ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाइंडिंग नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? अ कंपनी कैन नॉट बाय अडॉप्शन और रैटिफिकेशन ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट purporting to have been made on its behalf before the company came into। अब ये कह रहे हैं कि उनके behalf पे अगर किसी और ने भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो भी हम वो नहीं मानेंगे क्योंकि उस टाइम तक कंपनी बनी ही नहीं थी। Promoter remains liable on pre-incorporation contract। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये लाइबल होगा ही नहीं तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट में क्यों जाएगा? किसी ना किसी की तो लाइबिलिटी होनी चाहिए। So that liability is of the promoter. So the third point says that the promoter remains liable on pre-incorporation contracts. तो इसके अंदर क्या बोला है? It seems that the desire of the courts is to protect the infant company। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो जो नई कंपनी बनी है वो बिल्कुल न्यू लॉन्च हुई है, so it's like an infant company, बच्ची कंपनी है अभी वो। So they do not want the company to be burdened by the bindingness of the pre-incorporation contracts. Therefore, it says that the desire of the court is to protect the infant company from the burden of the promoter's promises, for they are profuse, and if the corporation were to be bound by them, it would be subject to many unknown, unjust, and heavy obligations. Right? So this book, that the notes that I'm giving you is from Reena Chadda book Corporate Law as per the Companies Act 2013, and this book has a lot of examples for each point. So I would suggest that once you are giving your exams, you should always state the correct name of the case that you are referring. Right? Cases are important and they should be read और उनका correct name लिखना एग्जाम में। अननोन नेम्स मत डाल देना जैसे यूजुअली बच्चे करते हैं। राइट? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, जो इस थ्योरी सब्जेक्ट को भी काफी इंटरेस्टिंग बना देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्री इनकॉर्पोरेशन एंड प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स।
अब बता रहे हैं, ये तो हमने अभी कंसेप्ट समझा था कि होते क्या है और बाइंडिंगनेस नहीं है। अब सेक्शन से बता रहे हो, सेक्शन 11 प्रोवाइड कर देता है ये that no company having share capital, whether public or private, would commence any business till it receives its certificate of commencement of business. However, this section 11 was deleted from the Companies Act 2013 in its 2015 amendment. Therefore, the requirement of receiving the certificate of commencement or is not important. तो ये पॉइंट मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज ये कह रहा था कि पहले क्या होता था कि जब तक तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलता तब तक यू आर नॉट अ कंपनी। लेकिन अब जैसे ही तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन हो गया, चाहे तुम्हें सर्टिफिकेट इशू हुआ हो या नहीं हुआ, तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तय हो गया रजिस्ट्रार में, दैट मीन्स यू हैव बिकम अ कंपनी। उसके बाद जो भी तुम कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हो वो बाइंडिंग हो। सो यही बात इसमें लिखी हुई है दैट अ कंपनी बिकम्स लीगली बाउंड ऑन प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज contracts made by the promoters before the formation of the company if the company executes a fresh contract after its incorporation or adopts the contract if it falls under section 15 and 19. अब हमने अभी तक ये पढ़ा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बाइंडिंग होंगे बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ये पॉइंट हमें बताता है कि कब वो बाइंडिंग बन सकते हैं। तो अगर पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी ने फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उन्हीं पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को या तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया या फिर एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करा पुराने ही कॉन्ट्रैक्ट का आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन, फिर वो बाइंडिंग हो जाएगा कंपनी। बिल्कुल सही बात है कि पहले वाले तो माने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो पुराने वाला अडॉप्ट करे कंपनी ने फॉर्मेशन के बाद तो माने जाएंगे। सो दिस इज द पॉइंट। ठीक है, Now what are provisional contracts? Provisional contracts क्या है? Before the company's amendment, अब जो 2015 में अगर amendment नहीं आई होती, so contracts which were entered into by the company after obtaining the certificate of incorporation, but before getting the certificate to commence the business were known as provisional contracts. तो provisional contracts वो होते थे जो binding नहीं होते थे कंपनी में, right? लेकिन अब ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि certificate of incorporation अब इतना important ही नहीं है। तो जैसे ही तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन हो गया वैसे ही तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये समझ में आया कि ये जो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्सेप्ट है ये अब किसी काम का नहीं है, लेकिन जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कब बाइंडिंग हो जाएंगे? तब बाइंडिंग हो जाएंगे जब या तो तुमने फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इशू कर लिया आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन और यू हैव अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। This was the introduction to what is the first stage of the incorporation of the company, that is the promotion of the company जो promoters करते हैं। तो हमने promoters की definition पढ़ी, promoters के rights and obligations पढ़े। अब हम आगे कि registration कैसे होगा। Second stage is the registration or incorporation of company. So are done with the first stage promotion and now we are in the incorporation stage. Right? Section 3 of the Companies Act 2013 provides that the company may be formed for any lawful purpose by 7 or more persons मिलके public company form कर सकता है, 2 या 2 से ज्यादा मिलके private company बना सकता है। अब हमने पिछली क्लास में एक 1 person company के बारे में भी पढ़ा था, which is a type of private company only, but उसके अंदर एक ही बंदा होता है। So क्या बोलता है सेक्शन नंबर 3? सेक्शन नंबर 3 बोलता है कि या तो 7 और मोर पर्संस मिलके पब्लिक कंपनी बनाएंगे, 2 और मोर पर्संस मिलके प्राइवेट कंपनी बनाएंगे और 1 पर्सन मिलके 1% कंपनी बनाएंगे। ठीक है, for a company can be registered, these are the steps taken by the promoter. तो what are the steps for incorporation? Number 1, check the availability of name for the company. भाई जो कंपनी का आप नाम लिखना चाहते हो वो किसी दूसरे का नाम नहीं होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए वो। तो वो वाला होता है फर्स्ट स्टेप, that the company cannot be registered with a name which is considered to be undesirable in the opinion of the government. The name should also be indicative of the objectives of the company and it should not be identical with any other existing company or LLP. Therefore, it is advisable that promoters select 6 names in order to preference and make an application in form number INC 1
along with the fees to the ROC. So this is the एप्लीकेशन किस में देनी है, फॉर्म नंबर दिस 6 नाम सिलेक्ट करना है, ठीक है. नेक्स्ट इट सेज प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो पहला काम है नाम चेक करना, दूसरा काम है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बनाना. मेमोरेंडम इज द अनअल्टरेबल चार्टर ऑफ द कंपनी. Memorandum of association is the constitution of the company and it is unalterable, which lays down the objectives of the company. Articles कौन होते हैं? Articles includes rules regarding the internal management of the company. मतलब वो memorandum के नीचे आते हैं. Therefore, both these documents must be prepared with great care and detail. क्यों? Because memorandum मुझे बताता है कि ये मेरे objects हैं, फिर तुम इसके बाहर नहीं जा सकते. Therefore, it is not advisable to have them printed unless the same have been vetted by the registrar of companies. पहले registrar से prove करवा लो, फिर बांटना है memorandum. Every memorandum and article of association must be signed by each subscriber with address, description, occupation. मतलब ठीक है. फिर जो भी तुम्हारे फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी है उसके बारे में सब कुछ भरना पड़ेगा और उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी that they are ready to be the directors of the company. जैसे ही आप उन डायरेक्टर्स का नाम भेजते हो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को प्रॉपर फॉर्म में, तो आपको क्या मिलता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट. सो इट सेज दैट द पर्टिकुलर्स ऑफ ईच पर्सन which are going to be the first directors of the company, there everything should be given along with their consent to act as the director of the company, and it must be filed in form number DIR 12 along with the fees with the registrar. If the said person does not have DIN, then he must apply for it electronically in form number DIR 3. यानी कि सबसे पहले नेम चेक करो, 6 नाम सिलेक्ट करो एंड एप्लीकेशन डालो. सेकेंड, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बनाओ और उनसे रजिस्ट्रार की परमिशन. थर्ड, फर्स्ट डायरेक्टर्स की डिटेल भरो. अब जिन डायरेक्टर्स का तुम डिटेल्स भर रहे हो उसके साथ उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी जाएगा फॉर्म में. और अगर बाय चांस दे डू नॉट हैव देयर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, दे हैव टू ऑब्टेन इट इलेक्ट्रॉनिकली बाय फिलिंग आउट द फॉर्म DIR 3, राइट, as per section 153 and 154. Now this is the preliminary work that you have to do. After having done the preliminary work, the promoters are required to make the application, final application to the registrar of the state in which the registered office will be situated, that we want our company to be situated. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के साथ? मेमोरेंडम डालना है, डिक्लेरेशन फॉर्म डालना है, प्रोफेशनल्स का, कॉस्ट अकाउंटेंट्स का, कंपनी सेक्रेटरी का जो फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है. एफिडेविट डालना है सीकिंग दैट ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स, मतलब जितने भी लोग मेमोरेंडम साइन कर रहे हैं, दे आर रेडी, दे आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स. Affidavit is a kind of proof that you are declaring that whatever information they have given is complete. Address डालना है कि आपका registered office कहाँ पे होगा. Every company is required to have a registered office within 15 days of incorporation. जब आपकी वो request approve हो जाएगी तो within 15 days में you have to have a registered office. So this is the point. So registrar will then scrutinize the documents filed, and on being satisfied and the requisite fees being paid, all the other legal requirements being complied, then they will issue the certificate of incorporation in INC 11. On the date that the certificate is issued, the registrar shall allot the company a corporate identity number, which will have a distinct identity for the company. एक तो होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो डायरेक्टर्स के लिए होता है, एक होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कंपनी को अलॉट होता है, ठीक है. This is the performa of certificate of incorporation, that I certified that this company was incorporated on this date. The CIN of the company is this. Right, now let's come to online registration of company. ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, खैर सब कुछ ही सिलेबस का पार्ट है. This is something interesting.
Because of this changing times, e-governance is very important. So it is an initiative taken by the Ministry of Corporate Affairs, which facilitate the companies to get registered online in the MCA portal, right? The process of online registration is the same, बस ये सब online होना है. तो पहला step क्या है कि director identification number obtain करो अगर first time directors हो, है ना? All existing and intending directors are required to obtain a DIN within the prescribed time frame. जैसे ही आपको मिल गया फाइल करो ई फॉर्म DIR 3. नेक्स्ट स्टेप है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करो. अब ये क्यों जरूरी है, ये उसमें नहीं था, क्योंकि अब तुम ऑफलाइन पेपर्स नहीं दे रहे तो हर पेपर को साइन तो करना पड़ेगा. सो फॉर साइनिंग यू हैव टू ऑब्टेन और एक्वायर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. So, जो Information Technology Act है 2000 की, it provides for the use of digital signature on the documents submitted in the electronic form to ensure the security and authenticity of these documents. Therefore, all the documents that you place in this e-governance portal of MCA, it has to be signed digitally, right? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? A licensed certifying authority issues the digital signature. Certifying authority कौन है जो ये issue करेगी signature? It is a person who has been granted a license to issue the digital signature as per the Information Technology Act 2000. पहला step क्या है? DIN को obtain करना. दूसरा step है digital signature certificate obtain करना. तीसरा step है to implement a role check in the MCA application. So it says that at the time of uploading the e-form on MCA, role check verifies whether this digital signature affixed on the form belongs to the director, belongs to the manager, belongs to the secretary, or whether this has already been registered on the MCA portal or not. It's like a checking कि जो signature है वो सही है कि नहीं. The next step that the promoter must take is to select the suitable names, up to maximum of 6 names जो अभी हमने पढ़ा था. Then the promoter must apply to the concerned ROC. कंसर्न का क्या मतलब है? जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पर ही आरओसी जाओगे ना, सो वहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है. रेलेवेंट फीस हैज टू बी पेड अलोंगसाइड द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. अप्रूवल ऑफ द नेम, द एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू कंपनी. जैसे ही तुम्हें नेम का अप्रूवल मिल गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू कंपनी के लिए अप्लाई करो बाय फिलिंग द रिक्वायर्ड फॉर्म. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के लिए डिफरेंट फॉर्म्स होंगे ऑफ कोर्स. तो 1% कंपनी है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 2 है. लेट्स से अदर देन ओपीसी है तो फॉर्म नंबर 7 है. विद इन 60 डेज ऑफ द नेम अप्रूवल आपको ये काम कर लेना है. ऐसा नहीं कि 1 साल बाद उठ के आ गए कि नेम अप्रूवल तो हो गया पहले, 1 साल बाद उठ के बाकी का काम करना है. नहीं, विद इन 2 months यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. सो द एप्लीकेशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन अब आप डालोगे तो फॉर्म नंबर 2 और 7 में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी तो क्या क्या सामान दोगे? Memorandum of Association, Article of Association, declaration by professionals, affidavit from subscribers and first directors, and verification of signatures. This is same as the offline process. Finally, within 30 days आपको पता चल जाएगा. A company furnishes now. Section 12 requires that a company furnish to the registrar verification office registered office within 30 days. उसके बाद next step क्या था? Registered office बनाना. तो ये भी within 30 days आपको complete करना है. फिर आपको we have to now form number DIR 12 में आपको appointment of directors के बारे में डालना है, key managerial personals के बारे में डालना है, and this should be filed with the registrar within 30 days from the date of appointment of every director and key manager. अब उसके बाद आप ई पेमेंट करोगे. फाइनली दिस स्टेटस विल बी आइदर विल बी अप्रूव्ड और रिजेक्टेड. अगर रिजेक्ट होता है यू हैव टू सी कि क्या आपने मिसिंग था और दोबारा से शुरू करना पड़ेगा. अदरवाइज इफ इट इज अप्रूव्ड द रजिस्ट्रार विल जनरेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन व्हिच विल कंटेन योर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. ये आपको विद इन 11 days मिल जाता है, विद इन अ फ्यू डेज. It is to be noted that no hard copy of certificate of incorporation issued. Everything is digital. Was the online method. So online and offline method are very similar.
The only difference is that there are certain time limits for each parts, as well as everything is online and you need a verified digital signature to attest your documents that these are correct documents, right? Next important topic is the certificate of incorporation really conclusive? Or the importance of the certificate of incorporation, क्योंकि certificate of incorporation is very important for us, है ना? But जो 2015 का amendment आया, उसमें change हो गया. So what it is trying to say is that we have to understand here is that it says that the concept of conclusiveness of certificate of incorporation seems to have lost its efficacy because of the amendment. क्यों? क्योंकि अब ट्राइब्यूनल जो है वो भी पास कर सकता है ऑर्डर to wind up the company or remove the name of the company from the registrar. So what we are saying is that under पहले क्या होता था that the certificate of incorporation used to bring the company into existence. आज भी existence में आई है company. वो आपको life of the certificate देता है. In other words, no one could question the validity of a certificate of incorporation once it is issued. मतलब एक बार अगर सर्टिफिकेट इशू हो गया मतलब तुम कंपनी हो गए. लेकिन अब अगर if you go into any unlawful activity or you do something which is out of the purview of memorandum of association, then the tribunal can pass an order to wind up your company. और फिर अगर आपके पास certificate of incorporation तो वो भी किसी काम का नहीं है. Why? Because the tribunal is the main power who can tell you to stop doing the business and who can ask you to wind up your business. So yes, certificate of incorporation is very important, but now we have a tribunal also who can override the certificate of incorporation. Now the next point is capital subscription. अब ये जो दो points थे, promotion और incorporation, बन गई company. बाकी के दो stages क्या थे? Capital subscription, right? Capital subscription. So what I want to say is that in this chapter, how to do promotion, how to do incorporation. The last two are capital subscription and commencement of business. Now, capital of subscription. Once a company is registered, it is ready to raise the capital sufficient to commence its business. A private company cannot ask for capital from the public, जो हमने last class में भी पढ़ा था. लेकिन in case of public company, the promoters can invite the public to subscribe to its shares, जिसे हम prospectus बोलते हैं, invitation to the public to subscribe to the shares. So a particular prospectus is issued by the public company. No allotment can be made unless the amount stated in the prospectus. Minimum subscription. तो जब भी आप invite करते हो applications, जैसे LIC ने IPO निकाला, that means LIC ने public को invitation दिया कि वो हमारे कंपनी में shares खरीदे. So जब तक minimum subscription, minimum लोग subscribe नहीं करते, तब तक वो माना नहीं जाता. तो वो minimum subscription क्या है? ये तुमने accounts में भी पढ़ा होगा. So as per the section 39(3) of the Companies Act, the requirement is 30 days from the issue of prospectus. Minimum subscription is 90% of the entire issue must be subscribed. Otherwise, वो subscription successful नहीं हुआ. तो 90% लोग बाहर आ जाने चाहिए कि हाँ भाई हम ready हैं आपकी क्या बोलते हैं capital में subscribe करने के लिए. So this is all about formation of the company. So the first step is the promotion. The second is incorporation. The third is subscription of your क्या बोलते हैं capital subscription. And the fourth was commencement of business. Commencement of business में क्या था that यही है कि आपको क्या बोलते हैं certificate of incorporation मिल जाता है. So I'll just read it. Earlier, the provisions of Section 11 had to be complied in order to receive the certificate of commencement of business. However, this section is deleted. तो जो fourth step था commencement of business, उसमें क्या होता था एक certificate of commencement of business मिला करता था after the capital subscription section number 11 में. But now in the 2015 amendment, it is deleted. So therefore now in this stage,
In this stage, the formation of the company is no longer relevant for a company as it can now immediately commence its operations after incorporation. तो जैसे ही इनकी incorporation हो गई, वो commence कर देंगे business. उन्हें commencement of business के certificate की जरूरत नहीं है because this module is deleted. तो यानी कि क्या समझ में आया हमें कि सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ यही दोनों which are the head. जैसे ही तुम्हारा incorporation हो गया, उसके बाद तुम capital subscription कर दो. Capital subscription तुम्हारा या तो successful होगा या unsuccessful होगा. But the most important is the incorporation of the company. So this was all about. The formation of the company, right? Now that we have understood the formation of the company, जिसमें हमें ये पता चला कि memorandum of association के बिना formation नहीं हो सकता, right? So what is this memorandum of association? Why it is known as unalterable? ये हमें बस थोड़ा सा एक बार देखना है. जो बेसिक आइडिया था वो हम कर चुके हैं, बट एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या और उसके बिना क्यों नहीं कंपनी बन सकती. So now I would like to share one document with you of MOA. Now in your screen, you will see now this is your memorandum of association वाला document, right? आप फटाफट से देख लेते हैं सर. What is a memorandum? फिर से पढ़ लेते हैं. Section 2 जो है, सारी definitions mostly Section 2 में है. So Section 2 सब Section 56 बोलता है. Memorandum means MOA of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act. तो टेक्निकली ये वाली डेफिनेशन इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताती कि इसके फीचर्स क्या है, व्हाट इज एमओए, बस वो इतना बता दी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो होता है जो ओरिजिनली फ्रेम हो रखा है या फिर उसे पिछले प्रीवियस कंपनी लॉ के हिसाब से जो भी अमेंडमेंट्स आए थे उसके हिसाब से चेंज कर रखा है टाइम टू टाइम. इट इज द फाइनल एमओए डॉक्यूमेंट, दैट इज एमओए. बट व्हाट इज एमओए? सो टू गेट इनटू लाइट अब हमें ये समझ में आएगा. A memorandum has been variously defined as the unalterable charter of the company.
It has been called the constitution of the company in relationship to the outside world. Macmillan क्या बोलता है? That the main Lord Macmillan क्या बोलता है? That the main purpose of a memorandum is to enable the shareholders, the creditors, and all those who deal with the company to know what is the permitted range of the enterprise. Range क्या है? So Palmer क्या बोलता है? That memorandum of association contains the objects of the company. कि वो किसके और डील करेगी, कौन से चीजों में डील करेगी. So therefore it identifies the possible scope of the operations of the company and it also defines the powers of the company. If anything is done beyond those powers or beyond the charter of the memorandum, then it is known as ultra vires of the company and it is therefore void. So what is ultra vires? Ultra vire means beyond the powers of the company. If you are doing something, that means it is wrong. So therefore it is void. What is the purpose of memorandum? भाई शेयर होल्डर्स को पता लगाना कि भाई किस टाइप की एक्टिविटी में बिलोंग करता है. कि फॉर एग्जांपल पीएनजी, भाई पता है पीएनजी हर तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है. इट्स अ कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस. फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ कंपनी, लेट्स से आईटीसी. भाई पता है आईटीसी सिगरेट्स बनाती है मैक्सिमम और दूसरा उसका एक सेगमेंट है जो फूड के आइटम्स बनाता है. तो मतलब कोई भी कंपनी कहाँ तक वो जा सकती है वो हमें मेमोरेंडम बताता है. अगर आईटीसी ने अपने मेमोरेंडम में नहीं लिखा होता दैट दे कैन डाइवर्सिफाई देयर ऑपरेशंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, अगर वो बोलते कि अब हम कभी भी डिफेंस में जा सकते हैं, तो वो नहीं जा सकती डिफेंस में आईटीसी जब तक उसके मेमोरेंडम में अलाउड ना. सो anyone who is dealing with a company, for example the supplier of the company, will know whether the transaction he intends to make with the company is within the objects of the company or it is ultra vires of the object. Next point. अब क्या क्या आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. हमें समझ में आ गया मेमोरेंडम क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, सबको बताना कि व्हाट इज द फील्ड ऑफ एक्टिविटी और व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंपनी. इसमें वो इन्वेस्ट करती है अपना टाइम, वैल्यू और मनी. अब उसके अंदर होता क्या है, ये मेमोरेंडम ये आपका डिवाइडेड है डिफरेंट टेबल्स. So as per section 4, the MOA of a company shall be drawn in such a form as is given in tables A, B, C, D and E in the schedule 1 of the Companies Act. अब in different tables में different you can say different headings for MOA. Table A is form for MOA limited by shares. अब different companies के different forms हैं. तो table A किसके लिए है? For those companies which are limited by shares. Table B किसके लिए है? For those companies which are limited by guarantee but do not have a share capital. What do you mean by limited by guarantee? हमने पिछली क्लास में भी कहा था. Limited by guarantee में क्या होता है? That certain shareholders of the company, the main directors of the company say that in case of winding up, I will pay this much amount. और वो disclose भी करते हैं अपने मेमोरेंडम में कि वो कितना अमाउंट पे करेंगे. ये वही वाला टेबल. So this memorandum is for companies limited by guarantee and not having share capital, limited by guarantee and having share capital. Table D क्या है? Form for memorandum of association for unlimited companies. Table E क्या है? Unlimited companies का. कहने का मतलब क्या है कि सबसे important दो तरह की कंपनीज होती है. एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होती है अनलिमिटेड कंपनी. इन दोनों कंपनीज के अंदर क्या आते हैं, या तो विद शेयर कैपिटल या विदाउट शेयर कैपिटल, या तो विद गारंटी या विदाउट गारंटी. तो उसी के बेसिस पे इन्होंने डिफरेंट टेबल स्पेसिफाई कर रखे हैं. राइट. सो एज पर सेक्शन 4, जो सेक्शन 4 है, द मेमोरेंडम ऑफ अ लिमिटेड कंपनी मस्ट कंटेन द फॉलोइंग क्लॉजेस. अब ये हमने डिफरेंट टेबल्स तो समझ ली, लेकिन हर टेबल के अंदर ये क्लॉजेस तो होंगे. ये क्लॉजेस आपको याद होने चाहिए. टोटल है 6 क्लॉजेस. नंबर 1 नेम क्लॉज. नेम क्लॉज नेम ऑफ द कंपनी. अब ये बोलता है कि लिमिटेड होना चाहिए, या तो आपके नाम के आगे, या प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी. ठीक है. और 2015 में तो कंपलसरी कर दिया गया है कि हर गवर्नमेंट कंपनी के आगे लिमिटेड लगा हुआ होना ही चाहिए. एंड इन केस ऑफ 1% कंपनी, 1% कंपनी लिखा होना चाहिए उसके नाम में. सेक्शन 8 कंपनीज को कोई कंपलसरी नहीं है, ना उन्हें लिमिटेड लगाने की जरूरत है ना प्राइवेट लिमिटेड.
सेक्शन 8 कंपनीज में यूजुअली वो आती है एनपीयूज वाली। सेकंड हो गया डोमिसाइल क्लॉज। डोमिसाइल क्लॉज क्या होता है, वो बताता है कि भाई कौन से स्टेट में इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है। ऑब्जेक्ट क्लॉज जो मेन क्लॉज है सबसे ज्यादा। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बताता है, which states not only the object for which the company is incorporated, along with matters considered necessary for its furtherance. This clause cannot provide for other objects. In other words, this clause is not required to be divided into main object, other objects. सबके सब main objects हैं इसमें. So, it states the object of the company. कौन से जो important चीज है company. Next है liability clause. Liability clause क्या बताता है? Which states the manner in which the liability of its members is to be limited, either by shares or by guarantee. In case of the company limited by guarantee, the memorandum shall state the amount each member has guaranteed to pay. अब वही बात है सेम कि भाई मेमोरेंडम के अंदर अगर तुम बाय चांस बाय गारंटी वाले हो, मतलब टेबल सी और डी वाले हो, तो उस केस में तुम्हें बताना पड़ेगा कि कितना अमाउंट तुम गारंटी में पे करने वाले हो इन केस ऑफ कंपनीज वाइंडिंग अप। तो दैट इज द लायबिलिटी क्लॉज। अगर बाय चांस गारंटी वाले नहीं भी हो तो तुम्हें क्लियरली स्पेसिफाई करो कि अनलिमिटेड कंपनी रहोगे, कि लिमिटेड कंपनी रहोगे, विद शेयर कैपिटल रहोगे कि विदाउट शेयर कैपिटल रहोगे, कितनी तुम्हारी मैक्सिमम शेयर कैपिटल होगी, ये भी पता होना चाहिए। ये बताता है हमें कैपिटल क्लॉज। Capital clause contains the amount of authorized capital divided into shares of fixed amounts and the number of shares with the subscribers to the memorandum. A company not having share capital need not have this clause. अब कोई without share capital वाली है तब उसको ये वाला clause लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि कौन से 100% लगाने पड़ेंगे, तो मेन नेम क्लॉज तो होगा ही, डोमिसाइल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज। कैपिटल क्लॉज हटा भी सकते हो अगर तुम विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी। The last is the association clause. Association clause states the desire of the subscribers to be formed into the company. A memorandum shall conclude with the association law. मतलब memorandum खत्म क्या होता है, conclusion होता है association law. Every subscriber to the memorandum shall take at least one share and shall write against his name the number of shares taken by him. हमें पता है कि 7 से ज्यादा लोग मिलकर पब्लिक कंपनी बनाते हैं, 2 से ज्यादा लोग मिलकर प्राइवेट कंपनी बनाते हैं। वो सब साइन करेंगे मेमोरेंडम और उनको कोई ना कोई शेयर लेना पड़ेगा। अगर वो विद शेयर कैपिटल वाले तो उनका नाम जाएगा, उनका नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने जो लिया है वो भी जाएगा। सो व्हाट इज टू बी नोटेड कि मेमोरेंडम लास्ट में प्रिंट होता है, डिवाइड होता है डिफरेंट पैराग्राफ्स में, साइन होता है, एटलीस्ट 7 लोग साइन करते हैं इन केस ऑफ क्या बोलते हैं पब्लिक कंपनीज, 2 लोग साइन करते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज एटलीस्ट, और एक बंदा साइन करता है इन केस ऑफ 1% कंपनी। अब इसमें भी अगर 1% कंपनी वाला अपने मेमोरेंडम में ये भी बताते हैं कि अगर बाय चांस दैट 1% डाइज और ही इज अनएबल टू कंटिन्यू हैंडल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो उसके बाद उसका नॉमिनी, उसके बाद नेक्स्ट बंदा कौन होगा, तो वो भी इसके अंदर बताना होगा। सो इट इज टू बी नोटेड दैट कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। अब ये अलग से आता है पॉइंट, माइनर कैन नॉट बी ए सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम। जहां हम ऊपर बात कर रहे हैं कि 7 लोगों को साइन करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी में या 2 लोगों को साइन करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी में, उसमें माइनर नहीं हो सकता। माइनर का गार्डियन साइन कर सकता है इन इट्स पर्सनल कैपेसिटी, लेकिन माइनर जब तक मेजर नहीं बनता तब तक वो इट कैन नॉट बी ए सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम। These are the different, this is the memorandum and these are the clauses, right? फिर इन क्लॉजेस को बहुत डिटेल में इस बुक में एक्सप्लेन कर रखा है कि लास्ट वर्ड्स में क्यों लिमिटेड लगाना जरूरी है, अगर लिमिटेड नहीं लगाया तो उस केस में कोर्ट ने क्या जजमेंट्स दिए हैं, ये सब इस बुक के अंदर काफी डिटेल में दे रखा है। कि अब जैसे जो नेम है, नेम के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, जैसे द नेम अडॉप्टेड बाय द कंपनी शुड नॉट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ द एम्बलम एक्ट, ये सब चीजें हैं इसमें। That is the point, right? Last point that I wanted to discuss today is doctrine of ultra wires, जो वहां पर भी फर्स्ट पेज पे भी आया था। The object clause defines the objects of the company कि भाई ये उसकी range of activity है। It defines and at the same time it delimits the field of the company। जैसे ITC डिफेंस में नहीं आ सकती जब तक उसके MOA में ऐसा ना लिखा हो, तो एक तरीके से MOA लिमिट भी करता है, डिलिमिट करता है कि भाई कहाँ तक कंपनी काम कर सकती है, और एक तरीके से
परमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज भी बताता है. सो अ कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग which is not allowed by the object clause and therefore by the Companies Act. If it does any such activity which is outside its object, it is known as ultra vires to the object of the company and it is therefore void and it cannot be ratified even by the assent of the whole body of shareholders. A company derives its powers essentially from the statute. जो constitution है उसी से उसकी power आती है. जो लॉ है उसी से उसकी पावर आती है. दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से उसकी पावर आती है. सो एनी एक्टिविटी बियॉन्ड सच पावर शैल बी इनफेक्टिव एंड देयरफॉर even if it is agreed by all the members, it is therefore ineffective. So this rule is popularly known as doctrine of ultra vires. The word ultra means beyond and vires means powers. Therefore ultra vires means beyond the powers of. Hence any act of the company which is outside the scope of its memorandum and the Companies Act is not binding on the company. The company cannot sue or be sued upon these acts. However, directors will be held personally liable to replace the company's funds if they have used it for any purpose foreign to the company's memorandum. अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा बनाया ही क्यों है? ऐसा इसलिए बनाया है कंपनी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए कि कई बार हो सकता है उसके डायरेक्टर्स जानबूझ के सिर्फ अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ आउटसाइड द स्कोप काम करें. तो भाई कंपनी लायबल नहीं होगी, वो डायरेक्टर्स लायबल होंगे. इस वजह से ये आया है. इसके लिए तुम ये केस पढ़ सकते हो जो इस बुक के अंदर गिवन है, एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड का केस, कि इसमें ये ऑब्जेक्ट्स थी और उन्होंने इसके बाहर काम करा तो कंपनी लायबल नहीं थी, कंपनी के डायरेक्टर्स लायबल थे. राइट. So the whole position regarding the ultra vires can be summed up. When an act is performed, even though it is legal, but it is not authorized by the object clause of the memorandum, it is said to be ultra vires and therefore it is null and void. An act which is ultra vires cannot be ratified even by the everybody, even by the unanimous consent of all the shareholders. सब लोग मिलके भी नहीं कर सकते. An act which is ultra vires, the directors, but intra vires, the company, can be ratified by the members of the company through a resolution passed at a general meeting. An act which is ultra vires the directors, मतलब जो directors के power के beyond है, लेकिन company के power के under है, वो कर सकते हो. वो अगर तुम resolution pass करते हो, मतलब members बोलते हैं कि हाँ भाई ये directors के power के beyond है, लेकिन company के memorandum में आता है तो तुम कर सकते हो. If an act is ultra vires the articles, मतलब articles of association के बाहर है कोई act, फिर भी तुम वो कर सकते हो after ratification, मतलब making changes to the articles. अब articles of association का हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे changes कर सकते हैं, बट इसमें सिंपल सी बात है कि रेजोल्यूशन पास होता है, मतलब शेयर होल्डर्स मिलके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हाँ भाई ये काम कर सकते हैं. However, the disadvantage of this doctrine outweighs the main advantage, mainly to provide protection to the shareholders and creditors. ये लाइन किसके लिए है? कुछ लोग बोलेंगे ये तो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए. बट ये क्यों करा गया है? To protect the protection, to give protection to the shareholders and the creditors. So this is the point. बाकी हर क्लॉज को इधर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है. अच्छा, alteration to the memorandum, ये समझ लेते हैं. A memorandum contains these compulsory clauses. Section 13 of the Companies Act says that a company may alter, वैसे ही unalterable charter है, but a company definition के लिए, क्योंकि constitution है इसलिए unalterable है, लेकिन constitution भी amend कर सकता है ना Indian constitution. तो इसमें क्या लिखा हुआ है? That a company may alter the provisions contained in its memorandum with the approval of its members through a special resolution. No alteration shall have any effect unless it is registered with the registrar. मतलब अगर तुम्हारे shareholders ने हाँ भर भी दी किसी alteration को related, जिसका process हम detail में पढ़ेंगे जब meetings and proceedings वाला chapter आएगा, what is special resolution, what is general resolution, quorum क्या होना चाहिए, कब हम माना जाएगा वो पास हो गए move. But the point is कि जैसे ही अगर special resolution में पास हो भी जाता है वो नहीं माना जाएगा जब तक तुम उसे registrar को नहीं बताते. So after minutes of the meetings हमेशा registrar के पास जाती है. So that is the point. ये बता रखा है कि कैसे कैसे changes करते हैं हम.
डालना पड़ता है, मीटिंग के मिनट्स देने पड़ते हैं, अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस बदला तब आपको फिर से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. सो दिस So the most important things we have already discussed. What is the definition of MOA? What is the purpose of MOA? What are the objects in the MOA? And everything else. Right. Now, I would ask you all to, ask your questions in this Q&A session. Okay. Now, I will read the questions of each person that has been posted in the Q&A and then we will discuss. भाई एक बच्ची या बंदे ने पूछा है, मैम कैन यू प्लीज प्रोवाइड अस द आर चड्डा रेफरेंस बुक. व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं जो जो चैप्टर्स तुम्हें करा रही हूँ, जो जो टॉपिक्स करा रही हूँ, मैं उसका तुम्हें आर चड्डा का दे रही हूँ पीडीएफ. प्लस जो हमारा क्लास का ग्रुप है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी फ्रंट पेज डाल दिया है ये बुक का. सो आई वुड सजेस्ट कि यू बाय दिस बुक एंड इफ यू कैन नॉट बाय देन प्लीज बाय द ई बुक ऑफ दिस बुक. राइट. So I hope this clears your question. Next, Shreya ने पूछा है, मैम ग्रुप. श्रेया, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि मैं ऑलरेडी ग्रुप बन चुका है जिसपे सारा मटेरियल फॉरवर्ड होता है. सो आई वुड सजेस्ट कि तुम अपने सीआर से या जो भी जो हेड है तुम उससे बात करो. नहीं तो मैं तुम्हें नाम बता देती हूँ ग्रुप का. उस ग्रुप में अपने फ्रेंड से पूछो जो ऑलरेडी एडेड है. ऑफिशियल कॉर्पोरेट लॉ DU इस नाम से ये ग्रुप है. तो उसके अंदर तुम ऐड हो जाओ. उसके अंदर सारे मटेरियल होते हैं शेयर. और अगर उसके अंदर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स तो यू कैन आस्क इट डायरेक्टली. फिर से मुझसे सारे क्वेश्चंस मोस्टली इसी से आए हैं कि मैम शेयर कर दीजिए मटेरियल. तो ये सबका मैं बता रही हूँ, आप ग्रुप में ऐड हो जाओ, आपके पास सब कुछ आ जाएगा एंड नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड. अच्छा मैम, प्रोड्यूसर कंपनी. अच्छा, प्रोड्यूसर कंपनी मैंने क्लास में डिस्कस नहीं करा था, बट जो नोट्स है मैंने उसके भेज दिए हैं. Producer company is basically like every other company. I'll just show you, I'll just tell you once more the exact definition. One second. Right. हाँ जी, प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है बता देती हूँ मैं आपको. There you. Now, basically producer company enables the those cooperatives जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं ना, वो मिल के प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं. So the Companies Act says that producer companies can be private limited companies या फिर जो cooperative companies हैं वो भी producer company बन सकती हैं. The name of the producer company ends with producer company limited. जैसे आज हमने पढ़ा था कि public company limited से होती है, ठीक है. प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है. इसी 1% कंपनी में 1% कंपनी लिखा होता है. प्रोड्यूसर कंपनी में एंड में क्या लिखा हुआ होता है? प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड. फॉर एग्जाम्पल, कोकोनट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड. सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनी को प्रोड्यूसर कंपनी बोलता है, ठीक है. जो सेक्शन 581A है वो बोलता है कि जो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो, वो सब प्रोड्यूसर कंपनीज में आता है. जो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट या कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वो भी प्रोड्यूसर कंपनी में आता है. सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. मैम आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो? वापस बताती हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ कॉर्पोरेट लॉ, रीना चड्डा एंड सुमंत चड्डा. दिस इज द page of the book. I do not have the PDF of this book, but I am giving you the PDFs for all the chapters that I am covering from this book only. Promoters liability क्यों नहीं पढ़ाया? कोमल. See, what happens is that our time is limited. So I tried to cover the concept of the whole topic so that I do not leave anything behind. तो मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ सकती बुक की, but yes,
everything I am covering which is necessary to understand the concept. Lakshay पूछ रहा है, is this live? I think yes, it is live. What is the name of the book and syllabus? SOL material is enough for corporate law. Okay. The name of the book I have already told you. Syllabus तुम्हारे पास है. अगर syllabus नहीं है तो मैं send कर देती हूँ group में. Online बहुत freely available है तुम्हारे पास syllabus. Unit 1 है तुम्हारा introduction. Unit 2 है documents. Unit 3 है management and meetings. Unit 4 है dividend accounts and audit. And Unit 5 है depositories act. ठीक है. तो आज हमने यूनिट 1 जो था हमारा वो कंप्लीट कर लिया है हमने. और यूनिट 2 में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो हमने आज कंप्लीट करा है. राइट. तो यूनिट 2 अब आपका नेक्स्ट सेशन में चल रहा है. एसओएल मटेरियल इनफ नहीं है. एसओएल मटेरियल में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, नो डाउट, बट आई वुड सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम एसओएल मटेरियल यू शुड फॉलो दिस रीना चड्डा वाला. सब लोगों के सेम ही क्वेश्चंस हैं. अच्छा मैम, इज इट कंपल्सरी कि हम केस स्टडी भी लर्न करें? व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल फीचर्स ऑफ द कंपनी, तो उसके अंदर तुम्हें फीचर्स के साथ केस तो याद करना ही पड़ेगा. अब केस का कंटेंट तुम अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, बट केस का नाम तुम्हें याद करना पड़ेगा. वन पर्सन आस्क्ड कि एग्जाम में क्वेश्चन सेक्शन लिखना कंपलसरी है. बिल्कुल कंपलसरी नहीं है सेक्शन लिखना. जितने याद हो सके उतने याद कर लो, अदरवाइज लीव इट. Everybody is saying that some people are not part of the group. Don't worry, I'll make sure कि you become part of the group. I'll ask everyone. I'll ask the admin of the group to tell everyone to join this group. कुछ टॉपिक्स अगर मैं छोड़ रही हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है. आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग. जैसे बीच में मैं जैसे 2 क्लासेस नहीं ले पाई, तुम्हारी फ्राइडे वाली नहीं ले पाई ना 2, अब नेक्स्ट फ्राइडे भी नहीं लूंगी, तो वो कंपेंसेट होंगी तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में. सो फर्स्ट माय एम इज टू ट्राई टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यू कैन से द मोस्ट एसेंशियल थिंग टू अंडरस्टैंड द होल कॉर्पोरेट लॉ फर्स्ट, और फिर अगर टाइम बचा तो जो थोड़े बहुत टॉपिक्स छूट गए हैं वो मैं वापस करवा दूंगी. But yes, you are required to read all the everything on your own. ये जो lifting of corporate wheel है वो बहुत ज़्यादा important है. Yes, lifting of corporate wheel is in your syllabus, और मैं next class में सबसे पहले फिर वही करा दूंगी. फर्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक था, तो इस वजह से टाइम नहीं बचा था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कराने का. Yes, it is in the syllabus, lifting of corporate wheel. So these are the things that I have been asked. That's it for today. I think any other questions? आज की क्लास से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, पुराने क्वेश्चन हैं सब. So the announcement is I'm in the chat box. I'm making an announcement of the name of the book ताकि सबको पता चले, और I'll make sure कि सब ग्रुप का पार्ट बन सके ताकि वो अपने क्वेश्चंस मुझसे पूरे, जैसे हम एक हफ्ते बाद मिलेंगे तो मुझसे शेयर कर सकें व्हाट्सएप में अपने क्वेश्चंस. कॉर्पोरेट द नेम ऑफ द बुक. अगर किसी को पीडीएफ मिल जाए ऑनलाइन बुक का तो प्लीज मेरे साथ भी शेयर कर देना. Right, so I have given the name and the author of the book. अब मैं देख रही हूँ इसमें अटैच हो सकता है क्या. मैं इसके अंदर फाइल अपलोड कर दूंगी, एक फोल्डर बना दूंगी जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो अब तक मैंने शेयर करे आप लोगों के साथ. ठीक है. सो आई थिंक दिस मच इज फॉर टुडे.
Any other questions from you people? Or should I leave now? Yes, you will be getting the recorded lectures. I think so. Yes, you will be getting the recorded lectures, Abhi Gupta. Where will the recorded lectures be available? Well, I think in your Microsoft Teams portal only. That's where the recorded lectures will be there for you. Microsoft Teams में सब कुछ recording सबको दिखाई देती है, तो उसमें check करो files में जाके recorded lectures. I think that's it. No more questions. I have in the announcement box, I have already given the name of the book. Now I'll share the notes in the group also. और यहाँ पे मैं देखती हूँ अगर तुम्हारा group limit WhatsApp का यहाँ पे खत्म हो गया है, so I would suggest कि तुम Microsoft Teams पे ही अपना एक group बना लो जिसमें बहुत सारे लोग ऐड हो सकते हैं. उसमें तो unlimited है, तो वो भी एक तरीके से group बन सकता है. It's up to you people. You have to be united to get all the data at one place. ठीक है? So thank you today for your cooperation. ग्रुप चैट का लिंक मैं शेयर कर देती हूँ चैट पे. एक सेकंड मुझे वेट टाइम दो, मैं ये लिंक शेयर कर